A very warm welcome to the class, guys. I really hope that you guys are doing well. So yesterday we've had a syllabus discussion और जैसा कि आपने देखा था कि syllabus का जो हमारा पहला chapter है वो कौन सा है? That is your writing in city life, which is class 11 chapter. तो देखिए गाइस, कोई भी चैप्टर को हम कैसे करेंगे, हम एनसीईआरटी को बेस बना के चलेंगे, ठीक है। और साथ साथ ही जहां पे मुझे लगा कि हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, आई विल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा, बिकॉज अगर आपने अपना सिलेबस चेक किया होगा तो यू वुड हैव नोटिस्ड कि सिलेबस में क्या चीज लिखी हुई है। सिलेबस सेज दैट यू हैव टू डू व्हाट, योर क्वेश्चंस, सर्टेन क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एट द लेवल ऑफ स्कूल, एनसीईआरटी लेवल पे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे विच आर गोइंग टू बी एट द लेवल ऑफ व्हाट, विच आर गोइंग टू बी एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, है ना। तो हम उसी हिसाब से करेंगे किसी भी चीज को। पहले हम अपना एनसीईआरटीज कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव सीन कि क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चंस देखा है मैंने जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं। दैट इज व्हाट वी विल डू। फर्स्ट वी विल कवर आवर एनसीईआरटीज और फिर हम उसके आगे जो है वो जाएंगे, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू डिस्कस अ ब्रीफ टाइमलाइन विथ यू ऑल। सो अगर हम एक टाइमलाइन की बात करें, मैंने कल भी किया था, but now let us try to understand what I'm trying to say here. So first of all, we have human evolution. Okay, so now human evolution, you all know, is also known as your prehistory. Okay, and why is this called prehistory? इसको prehistory इसलिए बोलते हैं because we don't have a lot of written evidence over here. हमारे पास written source करके यहाँ पे कुछ भी नहीं है. That is why it is also known as your prehistory. ठीक है, fine. Then human evolution के time period पे क्या हो रहा था? During human evolution, we were self-sufficient. In the sense, there was no interdependency. Everyone was, available for themselves. Everyone was okay for themselves. ठीक है? So economy क्या थी? Economy was self sufficient. ठीक है, इकोनॉमी क्या थी? इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट थी, मतलब इंटरडिपेंडेंसी नहीं थी. एवरीवन वाज हंटिंग, एवरीवन वाज गैदरिंग, बट देन इवेंचुअली we move towards the Neolithic and Chalcolithic period and we see that people have started domesticating, है ना. लोगों ने क्या करना शुरू किया है? लोगों ने एनिमल्स जो हैं उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया है, फाइन. और हमें क्या देखने को मिलता है? जस्ट सेकंड. So we have seen कि हमें क्या देखने को मिलता है? We can see domestication of animals, fine. At the same time, we can see that people have started growing their own products, है ना. लोगों ने अपना जो product है वो उगाना शुरू कर दिया है. People have started growing their own products, fine. That is okay. So what has happened here? So people have started doing agriculture. So जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि what has increased is we have become sort of we've become sort of dependent, है ना. देखो क्या हुआ, when people started practicing agriculture, they had to stay at one location for a long time. Why? Because obviously the food has to be ready, isn't it? Before you can harvest it, the food has to be ready. So you have to stay at one location for a long period of time. Okay? Now when you're staying at one location for a long period of time, there are a lot of things which you might not be able to do, है ना, जो शायद आप नहीं कर सकोगे. ठीक है, तो जो काम आप नहीं कर सकोगे, there are things that you are not able to do, जो काम आप नहीं कर पा रहे हो, so उसके लिए you'll have to have someone, isn't it? Like for example, if I am looking after my crops, I don't think I can go and hunt, or I don't think I can be a pastoralist. So there was division of labor, or you can say there was specialization of labor, fine. So when we move from human evolution to the period of civilizations, ठीक है, तो आप क्या देखोगे? You are going to see specialization of labor. Fine. And you will also see an
डिपेंडेंसी, ठीक है, क्योंकि बिना इस इंटरडिपेंडेंसी के कोई भी चीज, कोई भी सिविलाइजेशन जो है ना गाइज, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, बिकॉज इंटरडिपेंडेंसी इज द की टू civilizations existing. If you don't have interdependency, civilizations will cease to exist. Fine. Like for example, जैसे मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर पढ़ा रही हूँ, so I'm being enabled to teach you, right? I'm being given all the facilities which I need to teach you all. I have a board which I can write on, right? It's a smart board. I have water with me. I have my laptop with me. So, मुझे facilitate किया जा रहा है that I'm able to teach you all, right? So, I'm dependent on these things. These things are dependent on me. अगर मुझे इतना facilitate कर भी दिया जाए और मैं ही ना पढ़ाऊं तो फिर कैसे होगा, ठीक है? Similarly, if you guys are not there, then what is the point of me teaching? Isn't it? तो ये सब interdependent है, हम एक दूसरे के ऊपर dependent हैं. This is what we're talking about, and this is what makes the civilizations go around. Civilizations exist ही इस तरीके से करती हैं, ठीक है? Okay. तो जो पहला तो जो पहला सिविलाइजेशन गाइज हमें कवर करना है वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और जिसको कि हम राइटिंग इन सिटी लाइफ जो है वो भी कहते हैं, ठीक है, फाइन. सो चलिए अब हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम इसके ओरिजिन्स के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है. एक सेकेंड, let me just put this on charge. ओके, सो गाइज अगर हम ओरिजिन्स की बात करें, ठीक है, सो व्हाट इज मेसोपोटामिया, ठीक है, फाइन. सो जो नेम मेसोपोटामिया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मेसोस व्हिच मींस मिडल, ठीक है. सो ये कहां से आता है, derived from Greek word mesos, ओके, और इसका मतलब क्या होता है, मिडिल, ठीक है. मेसोस का मतलब क्या होता है, बीच में, या फिर इट बेसिकली मीन्स मिडिल, ओके. एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटामस, पोटामस मीन्स रिवर, ठीक है. So Mesopotamia क्या है guys? What is the meaning of this term? Mesopotamia means land between two rivers. ठीक है, fine. Now which is this land between two rivers? तो अगर हम two rivers की बात करें तो कौन से दो rivers हैं यहाँ पे? Which are the two rivers around which the civilization is flourishing? So we have Tigris and Euphrates. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं हमारे, जिसके इर्द गिर्द ये सारी चीजें हो रही हैं. सो दिस इज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ओके. ये दो चीज जो है वो याद रखेंगे कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. Now present day this civilization is part of which area? Present day this civilization is part of Iraq, okay. ये भी हमें बहुत जरूरी है याद रखना कि present day किसका पार्ट है, present day this is part of Iraq, fine. So this is, and what are they known for? Like Indus Valley civilization is known for seals, etc. Seals, weights, script, fine. They're very good town planning, their drainage, okay. What is this known for? This is known for a number of things, but most importantly, they are known for their writing system. ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए जाने जाते हैं ये लोग, तो वो क्या है गाइस, सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो वो है इनका राइटिंग सिस्टम, ठीक है. तो ये हो गई, क्या बात हो गई यहाँ पे. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द ओरिजिन्स, फाइन. हमने किसके बारे में बात किया, हमने ओरिजिन्स के बारे में बात किया है. Now we also have to understand
the kind of sources that we have to study this civilization. क्योंकि हम कोई भी चीज historical process जब शुरू करते हैं ना, तो it is very important that we know the kind of sources that we have. ठीक है? Okay, just give me 1 second, guys. Okay. So anyway, sorry guys, I just wanted to check something. So अब अगर हम बात करते हैं इसके origins की तो हमने बात कर ली, ठीक है? What are the sources that we have? है ना, इस पूरे एरिया को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? जैसे कि आप जानते हो, टू स्टडी द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज, वी हैव टू डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, है ना, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. सो हियर व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज डू वी हैव? सो वी एक्चुअली हैव अ नंबर ऑफ सोर्सेज गाइज, एंड मोस्ट ऑफ देम आर archaeological in nature. Fine. So we have buildings, statues, ornaments. ठीक है? So क्या क्या चीजें हैं? Buildings हैं, statues, ornaments, grave goods. All right. But most importantly, अगर हमारे पास कोई सोर्स है, अगर हमारे पास कोई सोर्स है, तो वो है इनके रिटन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है? Whatever they have left behind in the form of written documents or in the form of clay tablets, that becomes a major source of information. Fine. तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक बहुत major source of information है. ठीक है? All right. चलिए. So ये तो हो गई हमारे sources की बात. Fine. We also have to know, since we're talking about written documents, so अगर हम लिख रहे हैं तो definitely हम कोई भाषा का इस्तेमाल कर रहे होंगे, right? So what kind of written documents have been used? किस तरह के written documents का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. So what kind of language? So there's a history of language that Mesopotamia has. Fine. So I'll just tell you about this history of language कि क्या है इनका इतिहास. Fine. So they have a history of language. और क्या है इनका history of language? सबसे पहली भाषा जो है वो कौन सी आई थी? So the first language which they had started speaking, and that was known as your Sumerian. ठीक है? Sumerian जो है वो उनकी सबसे पहली भाषा थी. All right. Now, okay. So Sumerian जो है वो सबसे पहली भाषा थी. Fine. Then was gradually replaced by Akkadian from 2400 BCE. ठीक है? तो उसके बाद इसको किसने रिप्लेस किया? It was replaced by Akkadian. All right. 2400 BCE. Fine. Now guys, एक और चीज, वैसे तो मुझे पता है कि आपको आइडिया होगा ही, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता कि why do we use BCE and CE, एंड जो BCE के डेट्स हैं वो उल्टे क्यों चलते हैं और CE के जो डेट्स हैं वो सीधे क्यों चलते हैं, अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता है तो आप मुझे बताइएगा. I will definitely explain because I think this is something you all should know. Fine. So Akkadian was there from 2400. ठीक है? This language flourished about Alexander's time. Then from 1400 onwards we have Aramaic. ठीक है? तो 1400 onwards हमने क्या देखा? Sorry, Aramaic was being spoken. ठीक है? BCE. Okay? So 1400 onwards, what do we see? We see Aramaic being spoken, and finally we can see that people have started speaking Hebrew in 1000 BCE. ठीक है? तो जो लास्ट लैंग्वेज है वो क्या है? वो है हिब्रू, जो कि आज भी बोली जाती है. All right, this is still a language which is in use. Fine, ये language अभी भी इस्तेमाल में है. This is the next language which is being spoken. ठीक है? All right, चलिए.
अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंस क्या है, ठीक है, what kind of areas are they covering, so that is also very important to know. Let us focus on what, let us focus on the geographical expanse now. तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि जो एरिया है, दिस इज इन प्रेजेंट डे व्हाट, प्रेजेंट डे इराक, फाइन। दो हम सोचते हैं कि इराक बहुत सूखा होगा, बट इराक इज एक्चुअली अ लैंड ऑफ वेरी डाइवर्स इन्वायरमेंट, ठीक है, बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट है इनफैक्ट, फाइन। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यू हैव द ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन्स, ओके। सो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सो जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, मैं इसको आपको ड्रॉ करके समझा रही हूं, फाइन। तो मान लेते हैं कि ये आपका पूरा एरिया है, ठीक है, फाइन। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट गाइज, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है उसमें क्या आ जाएगा, यू हैव द undulating plains, okay. So northeastern part has what, northeastern part has the undulating plains, which is covered with mountain ranges, clear streams, wild flowers, and it receives enough rainfall to grow crops, fine. That is why agriculture was quite an important practice over here, and agriculture here began somewhere around 7000 and 6000 BCE. तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पे एग्रीकल्चर जो है वो कब शुरू हुआ था, 6000 एंड 7000 BCE के बीच में जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ, ठीक है। दैट इज योर अनड्यूलेटिंग प्लेन्स, ओके। नॉर्दर्न साइड पे यू हैव द स्ट्रेच ऑफ ग्रासलैंड्स व्हिच आर नोन एज योर स्टेपीज। तो ये जो नॉर्दर्न साइड है हमारा, ठीक है, तो यहां पे क्या है गाइस, यहां पे यू हैव ग्रासलैंड्स which are known as your steppies, ठीक है। So grasslands है तो obviously what kind of activities can be done, animal herding can be done, pastoralism can be done, ठीक है। So we since they have enough, you can say, grasslands, they are also able to domesticate different kinds of animals, right? They're able to domesticate sheep, goat, cows, pigs, etc. But mostly they would be domesticating sheep and goats, which would also serve for the purposes of dairy products, fine, and also for meat products, ठीक है, fine. Now to the east you have the tributaries of Tigris, okay. तो ईस्टर्न साइड पे क्या है, ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड है, यू हैव द ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे आपका ट्रिब्यूटरीज है किसका, टिग्रिस का, फाइन। दिस इज टुवर्ड्स द ईस्ट। नाउ टुवर्ड्स द साउथ इज द डेजर्ट, फाइन। साउथ वाला जो एरिया है गाइज, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये क्या है, दिस इज योर डेजर्ट। नाउ यू विल सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर इज द फैक्ट जो कि पहली सिटीज जो है ना, the first cities like Uruk, etc. ये जितनी भी cities हैं, the first cities have come up where? The first cities have come up in the desert area. Now you'll ask me, ma'am, how is this possible? ये कैसे हो सकता है? भाई undulating plains हैं, grasslands हैं, इनको छोड़ करके desert में बसने का क्या मतलब? There's a reason behind. तो चलिए हम देखते हैं कि वो क्या था, ठीक है? Now, the desert was able to support the cities. Why? Because Euphrates and Tigris, let me explain this. So जिसे, अच्छा नहीं, sorry, okay. तो basically क्या होता था, मान लो कि यूफ्रेट्स जो है वो, यूफ्रेट्स जो है मान लो वो यहां से चल के आ रहा है, ठीक है। So you know what Euphrates would do? It would break into these small channels, ठीक है। इस तरह से ना छोटे छोटे चैनल्स में
वो ब्रेक कर जाता था. फाइन. So what would happen? Euphrates would break into small channels. Fine. And what would happen is जब ये channels flood करते थे, okay? When these channels would flood, they would deposit a good amount of silt, okay? तो इन areas में जो areas पास में है, यहाँ पे क्या deposit करेंगे? Silt deposit करेंगे, right? और हम सब जानते हैं गाइस कि फ्लड के बाद जो सिल्ट डिपॉजिट होता है वो बहुत फर्टाइल होता है. इट्स वेरी फर्टाइल. इट्स अ वेरी गुड थिंग टू यूज फॉर एग्रीकल्चर. सो दीज चैनल्स, दीज स्मॉल चैनल्स, व्हेन द वाटर वाज मोर, दे वुड फ्लड, दे वुड डिपॉजिट द सिल्ट. फाइन. और ये सिल्ट जो है, दिस वाज एबल टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, दिस वाज एबल टू सपोर्ट लाइफ. ठीक है. ऑलराइट. So I'll just give you 5 minutes. If you want, you can take this down. आप 5 मिनट लेके इसको टेक डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. We'll focus on urbanism. Okay. Quickly take it down. तो क्लास का जो जो फ्लो है गाइज वो कुछ ऐसा ही रहेगा. I'll finish maybe 1 or 2 few topics and I'll give you time to write it down ताकि आप लोगों के जो नोट्स है वो साथ साथ ही हमारे खत्म होते. ये जो डायग्राम है वो जरूर टेक डाउन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए. सो गाइज, द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म. फाइन. आई होप आप लोग अपनी जो एनसीईआरटीज है उसको अच्छे से रेफर कर रहे हैं. ठीक है. सो कीप योर एनसीईआरटीज इन फ्रंट ऑफ यू, इट विल हेल्प यू. चलिए. सो अब हम बात कर रहे हैं अर्बनिज्म की. देखो, अब किसी भी सिविलाइजेशन को हम अर्बन कब कह सकते हैं? ठीक है. दैट इज द बिग क्वेश्चन, इजंट इट? वी कैन कॉल इट अर्बन. जैसे हम कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन. सो व्हेन कैन वी कॉल इट अर्बन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल? देखो गाइज, अर्बन और रूरल के बीच में ना एक बहुत बेसिक सा फर्क है. बेसिक फर्क ये है कि जो रूरल एरियाज होते हैं ना, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, राइट? They have a self-sufficient economy. They are more or less dependent on themselves, right? They are not interdependent. They are more or less dependent on themselves. अपना खाना खुद उगाते हैं. ठीक है, fine. They grow their own food. At the same time, because they're growing their own food, at the same time बहुत सारी basic चीजें हैं जो वो खुद ही कर लेते हैं. Like in some time, free time, they also practice weaving, carpentry, etc. ठीक है. So kahin na kahin, what are they? They are self-sufficient. Now the only difference between urban and rural economy is the fact that urban economy is not self-sufficient. Urban economy जो है, again, वो interdependent economy है. It is dependent on the rural areas for many things. Okay, so that is what the difference over here is. कि जो urban economy है वो क्या है? जो urban economy है वो interdependent होती है. It is not dependent. Fine. So how can we call urban cities, or how can we call Mesopotamia an urban civilization? Fine. Now, so there are 3 things which can, make a place into an urban civilization. So it has to develop in spheres other than food production. ठीक है. So अर्बनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स क्या है अर्बनिज्म के? ठीक है. व्हाट आर दी that is a fact here, that what are the indicators of urbanism? क्या है indicators urbanism के? So first of all, what is the first indicator? Your economy has to grow in sphere other than food production. मतलब सिर्फ food production जो है वो आपकी economy का base नहीं होना चाहिए. It has to grow in spheres other than food production. So that is the first indicator. Economy
ऑलराइट, सो इकोनॉमी जो है इट हैज टू ग्रो अदर देन फूड प्रोडक्शन गाइज, फाइन। फूड प्रोडक्शन से हट के अगर कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो दैट इज योर फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ अर्बनिज्म, फाइन। सो अदर देन दैट इट हैज टू हैव ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज, ओके। सो ट्रेड भी होना चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चर भी होनी चाहिए चीजें, दैट इज यू आर प्रोड्यूसिंग योर ओन थिंग्स, फाइन। एंड देन यू आर ऑफरिंग सर्विसेज एज वेल, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आप सर्विसेज जो है वो भी ऑफर कर रहे हो, देन ओनली इट कैन बी कॉल्ड एज एन अर्बन सिविलाइजेशन। हम तभी इसे एक अर्बन सिविलाइजेशन बोलेंगे, अदरवाइज ये एक अर्बन सिविलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है, फाइन। सो दीज आर योर इंडिकेटर्स, फाइन। सो as I told you that city people cease to be self-sufficient, fine. They depend on their products, agricultural products के लिए they depend upon the rural areas, ठीक है, fine. And the people also, है ना, मतलब ये सारी चीजें involved हैं. There are people who manufacture things for you. Like for example, if I am using a laptop, this is something which has been manufactured by someone, right? I am offering you my services, okay? You are gaining from my services, right? तो यहाँ पे वही same चीज कही गई है कि it will happen only when your economy grows in the direction of trade, manufacture and services that you can call yourself an urban civilization. Fine? Okay. Alright. So what is the mark of urban life? ठीक है, तो ये तो हो गया indicators, है ना। मार्क ऑफ अर्बन लाइफ जो है वो क्या है? सो मार्क ऑफ अर्बन लाइफ इज डिविजन ऑफ लेबर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डिविजन ऑफ लेबर और यू कैन से स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इज व्हाट, इट इज द मार्क ऑफ एन अर्बन सिविलाइजेशन, है ना। वो क्या होती है गाइज, वो मार्क होती है एक अर्बन सिविलाइजेशन की, फाइन। इसके अलावा एक और बहुत मेजर फैक्टर है व्हिच हैज टू बी देयर एंड दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फाइन, व्हिच इज द अदर फैक्टर दैट वी हैव टू फोकस ऑन। The other factor that we have to focus on is social organization. या मतलब कोई एक हायरार्की या कुछ ऐसा जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके चीजें नहीं हो सकेंगी, फाइन, because without that things are not going to be working in your way. So you have to have a social organization, right? There has to be, you can say, authorities which would be organizing trade, which would be organizing storage. So एक social hierarchy होनी चाहिए ताकि कोई एक जो है वो कमांड दे और कोई एक जो है वो उसकी बात सुने, ठीक है। तो ये क्या है, these are your indicators of urbanism, fine. So now let us see how Mesopotamia falls into this category. Was Mesopotamia self-sufficient society? No, it wasn't. Mesopotamia was not self-sufficient because it lacked various things, और जो चीजें वो lack करते थे वो चीजों को मेकअप करने के लिए वो ट्रेड किया करते थे. So this is what makes Mesopotamia fall into the category of urban civilization. ठीक है, so चलिए अब हम क्या देखेंगे. All right. So Mesopotamia definitely not what? Definitely not a self-sufficient civilization. Self-sufficient जो है वो बिल्कुल भी नहीं थे. Fine. So they were rich in food resources. They lacked what? They lacked mineral resources. है ना? किन किन चीजों में वो lacking थे? चलिए हम वो देख लेते हैं. Okay. So they lacked what? They lacked mineral resources, fine. And they also lacked stone for tools, steels.
So they also lacked what? They also lacked stone, है ना? और stones की guys हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है for making different products, right? So stones can be used for making tools, seals, jewelry, etc. लेकिन वहाँ पे stone की जो है वो कमी थी, fine. And they also were lacking in wood, okay? So remember guys, the Iraqi date palm, है ना, जो खजूर का पेड़ होता है वहां पे, the Iraqi date palm. So this Iraqi date palm is okay, मतलब उसका जो wood है वो सही होता है, लेकिन फिर भी उसका wood इतना अच्छा नहीं होता है that it could be used for making different products. जैसे उससे आप कार्ट नहीं बना सकते, व्हील्स नहीं बना सकते, बोट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने कभी खजूर का पेड़ देखा होगा तो यू वुड सी कि वो अंदर से ना मोस्टली खोखला होता है, ठीक है, इट्स एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, सो डज नॉट हैव दैट बैंडविड्थ, उसका उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, ठीक है. सो यस, मेसोपोटामियंस हैड ट्रेड. सो व्हाट वर दे एक्सपोर्टिंग? क्या चीजें वो एक्सपोर्ट कर रहे थे? सो दे वर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ओके, ये चीजें वो एक्सपोर्ट कर रहे थे. इंपोर्ट क्या कर रहे थे गाइस? ठीक है, व्हाट वर दे इंपोर्टिंग? फाइन. So they imported a lot of things, like for example wood, copper, tin, silver, gold, shell. ठीक है, so क्या क्या import कर रहे हैं? wood, copper, tin, silver, और कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? दे डूइंग दिस फ्रॉम टर्की एंड ईरान. So it's not Turkey, it's Turkey. They're doing this from where? They're doing this from Turkey and Iran. ठीक है, so they're doing what? They are importing things. ये चीजें वो क्या कर रहे हैं? Import कर रहे हैं. Guys, just give me 1 second. Let me just have some water. Just 1 second, okay? So क्या कर रहे हैं? They're doing this. They're importing this from Turkey and Iran. ठीक है, fine, all right, okay. So guys, ये जितने भी regions की हमने अभी बात की, जैसे टर्की, ईरान और across the Gulf, now these regions had enough minerals and stones, right? But they lacked agriculture, है ना? Agriculture जो है वो उतना strong नहीं था, and that is one of the reasons as to why trade was being established. Fine, okay. अब देखो, ट्रेड तो चलो ठीक है, ट्रेड की हमने बात तो कर ली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर ली, लेकिन एक बात बताओ, क्या ट्रेड जो है वो बिना वाटरवेज या फिर कह सकते हो जैसे बिना ट्रांसपोर्टेशन के हो सकता है? नॉट रियली, राइट? You need transportation. Without transportation, you cannot have trade. Okay? So, what is the best and the cheapest mode of transportation? Waterways, ठीक है? Waterways क्या है guys? सबसे best और सबसे cheapest mode of transportation है. So, don't you think Mesopotamia is sort of lucky in that, right? Because Mesopotamia has enough sources of water, and that is one of the reasons as to why the Euphrates has been called as the world route. ठीक है? So Mesopotamia has
गाइस यहाँ पे ना एक चीज समझनी है हमें कि यूफ्रेट्स को ना वर्ल्ड राउट क्यों कहा गया है. So the reason why Euphrates has been called as the world route is the fact that Euphrates was able to connect Mesopotamia with the rest of the world. मतलब बाकी जितनी भी चीजें, बाकी जितनी भी एरियाज हैं उसके आसपास की, Euphrates was able to connect Mesopotamia with the rest of the world through, trade, etc. So देखिए guys, trade तभी होगा when you have what? When you have a good waterway, right? When you have the cheapest mode of transportation, that also has to be your fastest, isn't it? So, Mesopotamia was drained by two rivers, which is Euphrates and Tigris, fine? So, ये जितने भी दोनों rivers हैं, they really helped Mesopotamia in connecting within the civilization and outside of the civilization as well. ठीक है? That is one of the reasons why Euphrates was known as the world route. Why? Because it connected Mesopotamia and Mali especially, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, to the rest of the world. ठीक है? चलिए. Now, next what we have is development of writing, but just take these two things down. फटाफट से इसको टेक डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Quickly take this down, then we'll move ahead. All right, चलिए. So, I'm audible. I'm sure you're done with this. तो अब हम चलते हैं. Let's move ahead with the discussion of development of writing. अब ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है guys. और एक और चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि this is the one of the main things that Mesopotamia is known for, है ना. तो बहुत जरूरी है कि हम देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, चलिए. Now, okay. So, now we'll focus on development of writing. So Mesopotamian tablets were written down around 3200 BCE. Fine, ठीक है. So कब से लिखना शुरू कर दिया गया था? So tablets started when? So आप देख सकते हो कि काफी टाइम से जो है वो ये रिटन मटेरियल अवेलेबल है. 3200 BC से ही स्टार्ट हो चुका है. फाइन. So, if you look at these pictures, you will see, if you look at these tablets, you will see it has some picture like, markings also, it has some numbers also, and there's a list of around 5000 things of ox, fish, bread, loaves, etc. Fine, ठीक है. So, यहाँ पे हम एक चीज जो है वो बिल्कुल assume कर सकते हैं that writing begins only when people needed to keep a track of transaction. Please understand that Mesopotamia is engaging in trade. ठीक है. तो अब हमें कैसे पता कि हमने कितना सामान भेजा या वहां से कितना सामान आया, तो उसका तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना. ठीक है. You have to keep a record of these things, right? How do you do that? So you have to write things down. Fine. So this is when writing has developed, guys. Okay. Writing का development ही तभी हुआ था when we needed to keep records of transaction. Fine. So ठीक है. क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी था. इट वॉज नेसेसरी टू कीप दोज रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. फाइन, ठीक है. सो चलिए हम देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है वो क्या था. फाइन. सो मेसोपोटेमियंस वर राइटिंग ऑन क्ले टैबलेट्स. ठीक है. किस पे लिख रहे होते थे ये? दे वुड बी राइटिंग ऑन क्ले टैबलेट्स. सॉरी, ओके.
सो क्ले टैबलेट्स पे लिख रहे होते थे. नाउ अ स्क्राइब, द पर्सन हु इज राइटिंग, ठीक है, ही वुड टेक अ वेट क्ले, मान लो, ओके, वेट क्ले को लेगा वो, ठीक है, फिर क्या करेगा, उसको पैट करेगा, मतलब उसको ऐसे थपकी दे देकर, जैसे मान लो ये मेरा क्ले है, मैं उससे थपकी दे देकर ऐसे फ्लैट, जैसे हम रोटियां फ्लैट करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे थपकी दे देंगे, उसको क्या करेंगे, उसको एक कंफर्टेबल साइज में लेके आएंगे, समथिंग विच फिट्स इनटू माय हैंड. ओके, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू अ साइज विच फिट्स इनटू माय हैंड. अभी थोड़ा बड़ा है, जिस एग्जाम्पल के लिए यूज कर रही हूं. सो दिस इज गोइंग टू फिट इनटू माय हैंड. फाइन, दिस इज फिटिंग इनटू माय हैंड. सो मैंने इसको पैट करके एक प्लेन सर्फेस ड्रॉ किया है. So this is fitting into my hand. I'm now going to start writing. ठीक है? So now with the sharp end of a reed cut obliquely. ठीक है? So what have they done here? Okay. So what it fits into the hands of the scribe, है ना? So ये scribe के हाथ में जो है वो अच्छे से fit बैठ जाता है. Fine. अब क्या करते हैं, they take a reed pen. What is a reed? Reed is like a bamboo. ठीक है? Fine. बैम्बू का एक पतला सा स्टिक लेकर के उसको obliquely कट करते हैं. What do you mean by this? So imagine something like this. एक सेकेंड ना. Reed cut obliquely. अब इसका क्या मतलब है, मान लो कि ये आपका रीड पेन है, ठीक है, फाइन. इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको ऐसे ओब्लीक, उसको ऐसा तिकोना कट करना है, ठीक है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. फाइन. यू हैव सीन फाउंटेन पेन्स और इंक पेन्स, राइट? सो दिस इज व्हाट अ रीड पेन लुक्स लाइक. सो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको ओब्लिकली कट करते हैं in a diagonal, and it forms what? It forms like a triangle shape, just like you have in fountain or in ink pens. Okay, so then what you do is you start wedging, you start pressing wedge shaped sign. Okay, तो आप क्या start कर देते हो, then you start pressing wedge shaped signs. अब ये वेज शेप्ड साइंस क्या है, ठीक है? अगर आप देखोगे गाइस, इसको हम ओब्लिकली कट करते हैं, ठीक है. सो इफ सपोज दिस इज योर टैबलेट, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा टैबलेट है, फाइन. तो इसमें मैं क्या करूंगी, वेज शेप्ड. ओके, वेज शेप्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेज, ओके, दिस इज वेज, फाइन. This is wedge, okay, this is wedge, okay. So like this I'm going to do what, like this I'm going to make wedge shaped signs onto the clay tablet. Fine. हम क्या करेंगे, हम wedges बनाएंगे. Wedges is this tikona, triangle shaped. Fine. So this was known as your cuneiform script. Okay, जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वट एवर इज बीइंग यूज्ड हियर, दिस वेज शेप्ड, ओके, दिस वाज नोन एज व्हाट, दिस वाज नोन एज योर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. ठीक है. अब गाइस क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होती क्या है, चलिए हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. फाइन. सो क्यूनियस मीन्स व्हाट, वेज. ओके, सो किससे डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड. फाइन. क्यूनियस का मतलब क्या होता है, वेज. ओके, वेज इज दिस शेप. फाइन. ओके, एंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फॉर्मा विच मीन्स शेप. ओके, और फॉर्मा का मतलब क्या है, फॉर्मा का मतलब होता है शेप. ठीक है.
So that is why it is called the cuneiform script. Why? Because जो भी हम लिख रहे हैं, whatever we are writing is wedge shaped, right? Wedge shaped में है, ये जो shapes हैं यहाँ पे, इनको हम wedge shape कहते हैं, ठीक है? Fine. So most of the writing had to be done while the clay was still moist, because once the clay had hardened, you cannot write anything on it. And once the writing was done, either it was sun dried or it was also it could have been baked as well. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, तो सन में ड्राई कर देंगे या फिर उसको हम बेक कर देंगे, ठीक है, फाइन. नाउ so once the transactions are complete, or once the signs have been etched onto it, and once the clay has dried, nothing more could be etched onto it. मतलब उस पे आप और कुछ एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लिख सकते थे, ठीक है. So जब आप उस पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हो, so for every transaction that you need to record, you are going to need a new clay tablet, fine. And that is one of the reasons as to why we have found thousands of clay tablet in the Mesopotamian civilization, ठीक है. और कई बार ऐसा होता था कि जैसे जो टैबलेट्स यूज की नहीं होती थी, उनको फेंक दिया जाता था, उनको तोड़ दिया जाता था, फाइन. ऑलराइट. So now when eventually writing developed, जैसे writing develop होने लग गई, so writing was now no longer just used to maintain or to write down transactions. नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता था, फाइन. जैसे it was also used for making dictionaries, फाइन. So मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिख देती हूँ, uses of writing. ठीक है, डिक्शनरी बनाने के काम आता था. गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर, सो लीगल वैलिडिटी देने के काम आता था. अनाउंसिंग द चेंजेस द किंग हैज मेड इन द लॉज ऑफ द लैंड. ओके, तो ये सब चीजों के लिए जो है ना, वो राइटिंग का इस्तेमाल हम कर रहे थे, ठीक है, फाइन. ओके, अब एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या थी. वॉज इट अ वॉवल, वॉज इट अ सिलेबल, वॉज इट सिंबॉलिक, क्या था वो हम देख लेते हैं, ठीक है. चलो, अभी ऑल राइट. तो सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या है. सो जो भी क्यूनिफॉर्म साइंस थे, जो भी वेज शेप साइन थे, they were not representing a single vowel or a consonant, fine. So each wedge है ना, जो भी वेजेस थी वो क्या रिप्रेजेंट नहीं करती थी. दे वुड नॉट रिप्रेजेंट अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट. जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये हमारा वेज है, ठीक है, तो इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ए, फाइन. ये ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. इन फैक्ट इट रिप्रेजेंटेड syllables, fine. It represented what? It represented syllables, okay. So what do you mean by this? What do you mean by it represented syllables? So it represented syllables in the sense
कि एक जो वर्ड है, ठीक है, एक जो वेज है वो एक सिलेबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल और, ला, इन, ठीक है। सो इस तरीके से इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर सिलेबल्स, फाइन। सो ईच एंड एवरी वेज, ओके, सो मान लो कि ये एक ऐसा वेज है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू अ सिलेबल, फाइन, जैसे कि इन, ठीक है, इट कुड मीन इन, फाइन। अगर यहां पे अगर ये होता, अगर दिस वुड हैव बीन ऑन द बेसिस ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, then if I'm writing in, then it would have at least two wedges, one for I and one for in. But no, one wedge shape is representing what? One wedge shape is representing, अरे यार, okay, so one wedge shape is representing what? One wedge shape is representing this entire syllable, ठीक है। So Mesopotamians obviously had to learn, the scribes had to learn a number of signs, है ना। They also had to be very skilled guys. देखो ऐसा नहीं है कि वो देख देख करके लिख सकते थे, नहीं, they had to be skilled because they were writing on clay tablets. अगर जरा सी भी देरी करेंगे वो, then what is going to happen if they make even the slightest of mistake, or if they make slightest of delay, then the clay is going to get dried and they would have to start all over again, वापस से पूरा शुरू करना पड़ेगा, that no one really wanted, ठीक है। So writing was seen as a skilled craft, fine, something which required an enormous amount of intelligence and achievement and years of practice, ठीक है। All right, now अगर हम लिटरेसी की बात करें गाइस, सो लिटरेसी जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई नहीं थी, ठीक है। हमें कैसे पता, हाउ डू वी नो दैट लिटरेसी वाज़न्ट दैट हाई? Because understand that writing is a very difficult job, isn't it? You would have to learn hundreds and hundreds of signs. They were really complex, first of all, and you had to be very thorough with them, है ना। आपको at the same time बहुत thorough होना पड़ेगा. You cannot delay writing them down. So writing was very difficult, and as a result, it was what? It was something which was not very prevalent, and as a result हम ये बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया में लिटरेसी जो है वो थोड़ी सी कम थी, और किसी भी राजा को अगर थोड़ा बहुत भी लिखना आता होगा ना, so he would be all boastful about it. He would make sure to have an inscription installed ताकि सबको पता चले कि हाँ, he knows how to read and write, ठीक है। Alright, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने बुक खोल रखा है, so you would see that there's a inscription which has been given, right, which says, okay, there's a long mythical poem which says that let the verses be held in remembrance and let the elder teach them. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो verses मैंने compose किए हैं, because I'm an educated person, because I know how to read and write, the king is saying, so let the verses be in remembrance, लोग इस चीज को याद रखेंगे, let the elders teach them, जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को इसके बारे में बताएंगे कि I am the one who has composed it, fine, and the wise will also, the wise and the scholars are going to discuss it, then the father is going to repeat them to his sons, okay, और जितने भी लोग हैं वो सब इस चीज को सुनेंगे, that what, that I have composed something, and when I've composed something, that means I am literate, I know how to read and write, which was very difficult, ठीक है। दो uses of writing जो है वो हम already discuss कर चुके हैं, but there's a small story which is given here which I think we should discuss, because कभी कभी इन stories में से भी question आने के chances रहते हैं, ठीक है। All right. Now, there's a long Sumerian poem, and this poem is about Enmaker, who was the king of Uruk, ठीक है। Now, Uruk is a city in Mesopotamia. Please pay attention. What is Uruk? Uruk is a city in Mesopotamia. Fine. It's a huge and very beautiful city. And Enmaker is what? Enmaker is the king of Uruk. Okay.
And what has he done? उसने एक और चीज क्या की है? He has gotten or he has composed this epic poetry in Sumerian. It is about him. ठीक है? So, Enmarker is associated with the organization of first trade in Sumer. So, in the early days, trade was not known and he was the one who started it. ठीक है? तो उसको क्या हुआ ना कि उसको लैपिस लजूली जो है वो चाहिए था और उसको और भी बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स जो हैं उसकी जरूरत थी. Why? Because he wanted to decorate the temple. He wanted to beautify the temple. Fine. So he had sent his messenger to go to another city or the city of a distant land called Arata. एक दूसरी जगह है, एक दूसरा लैंड है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अराटा. सो ही हैड सेंट हिम देयर. किस लिए? ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो वहां से जा करके लैपिस लजूरी और जो भी अदर प्रेशियस स्टोन्स है वो वहां से ला सके. ठीक है, फाइन. सो द मैसेंजर हीडेड टू द वर्ड ऑफ द किंग. फाइन. मतलब उसने अपने राजा की बात बहुत ध्यान से सुनी कि उसको क्या जाके बोलना है. सो ही ट्रेवल्ड. फाइन. So at the night he followed the stars and during the day he would follow the sun. Fine. And he had to go down several mountain ranges, and while he was going up the mountain ranges, तो सूसा करके एक सिटी है जहां पे जब वो नीचे देख रहा था माउंटेन रेंजेस से तो उसको दिख रहा था कि सूसा के लोग एकदम ऐसे चींटी के बराबर जो है वो नजर आ रहे हैं. ठीक है. So he crossed 5 mountain ranges, 6 mountain ranges, 7 mountain ranges. Finally, he had reached Arata. Okay? Now, when he had reached Arata, he could not really convince the king to give his lapis lazuli for enmarker. Okay? So he had to make his journey back. और फिर उसको राजा ने भेजा नए इंस्ट्रक्शंस के साथ. फाइन. तो पहले वो वापस गया, वहां पे राजा ने उससे कहा कि अच्छा चलो नए इंस्ट्रक्शंस ले लो. फिर वो वापस गया, फिर वो अराटा के जो किंग है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. फिर वो अपने राजा के पास वापस आया. एंड एवरी टाइम ही वुड कैरी समथिंग न्यू. ही वुड कैरी अ रिक्वेस्ट, ही वुड कैरी अ थ्रेट, ही वुड कैरी अ ट्रेड प्रपोजल. लेकिन बात जो है वो नहीं बन रही थी. एंड अल्टीमेटली द मैसेंजर वाज सो टायर्ड that he grew weary of mouth. What do you mean by that? So he started mixing up the messages. उसको अब उसने इतनी सारी चीजें बोल दी, कभी इधर बोल रहा है, कभी उधर बोल रहा है, कभी इधर बोल रहा है, कभी उधर बोल रहा है, तो इतना थक गया था बोलते बोलते एंड ट्रैवल करते करते. ही स्टार्टेड मिक्सिंग अप द मैसेजेस. सो वेरी मच लाइक चाइनीज विस्पर. ठीक है. So then Enmarker then found a clay tablet and he wrote down the words. Fine. And this is how it is said that writing actually begins in Mesopotamia. ठीक है. राइटिंग की जो शुरुआत है वो कुछ ऐसी ही होती है जब एनमार्कर ने लिखा इन चीजों को. ठीक है. दैट इज व्हेन एंड दैट इज हाउ राइटिंग डेवलप्स इन वेयर दैट इज हाउ राइटिंग डेवलप्स इन मेसोपोटामिया. ठीक है. चलिए. सो यहाँ पे जो हमारा राइटिंग वाला सिस्टम है वो खत्म होता है. इसके बाद हम अर्बनाइजेशन वाला पोर्शन शुरू करेंगे. बट उससे पहले आई नीड यू टू टेक दिस डाउन. इसको फटाफट से टेक डाउन कर लीजिए. फिर हम देखेंगे अर्बनाइजेशन. I'll also get the tab, guys. ताकि अगर कोई डाउट है तो फिर आप पूछ लीजिएगा. टैबलेट टैब दे दूँ. Quickly take it down.
गाइज अभी हम सिर्फ बेसिक एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसके आगे की चीजें कवर नहीं करेंगे। जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है, सॉरी एग्जाम पैटर्न में, दैट यू विल बी आस्क्ड सम डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस इज वेल, तो वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। जहां पे लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट है वहां मैं डेफिनेटली करूंगी। ओके, तो ये हो गया सबका। चलिए, सो ये तो बाद में भी लिख लीजिएगा, अब इतना कोई बिग डील नहीं है इसमें। So now, remember when I started the chapter, I told you about urbanization in Mesopotamia, right? And I told you that urbanization in Mesopotamia begins with South Mesopotamia, है ना? Southern Mesopotamia से वो शुरू होता है. Even though they were deserts, it started with Southern Mesopotamia, fine. So from 500 BCE, settlements have begun to start coming up in Southern Mesopotamia, ठीक है? Different kinds of settlements थे, जैसे those around temples, those which developed because of trade, there were imperial towns as well, fine. लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक टेम्पल टाउन, ठीक है। So what are we going to discuss? We're going to discuss urbanization, all right, ठीक है। और इस urbanization में पहली चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? वी आर डिस्कसिंग अ टेम्पल टाउन, गाइस, ओके। So when did this begin? When this urbanization begins? So it begins somewhere around what? Somewhere in 5000 BCE, okay. So we can see that people have started settling down, or people have started this urbanization process, all right, where in southern Mesopotamia. क्यों हुआ था ये मैं आपको already बता चुकी हूँ, ठीक है। Now the earliest cities emerged, and there were different kinds, like for example those which developed around temples, those which developed the centers of trade. There were imperial towns as well, ठीक है। तो हम दो को देखेंगे, यानी कि टेम्पल टाउन्स को देखेंगे और हम ट्रेडिंग टाउन्स को जो है वो देखेंगे, ठीक है, फाइन। सो लेट अस टेक अ लुक एट द टेम्पल टाउन्स, फाइन, ओके। So what we know from here is that the early villagers, they would do what? These early villagers, they would build and rebuild temples on the different spots or selected spots in the villages, fine. Now the earliest known temple was very small and was made of unbaked brick, ठीक है। What was it? Small and made of अनबेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। अनबेक्ड का मतलब क्या है कि वो पके हुए ब्रिक्स नहीं है। सो व्हेन ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स जो है वो पके हुए नहीं होंगे गाइस, तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दैट? सो बिकॉज ऑफ दैट, इफ द ब्रिक्स आर नॉट बर्न्ड इनफ, या वो पके हुए नहीं है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देन ब्रिक्स जो है वो कह लो कि मजबूत नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड इफ देयर इज अ रेन और देयर इज अ कांस्टेंट फ्लड, द temples could just wash away, fine. So the earliest known temples were made of very small and unbaked bricks, okay. Temples were seen as residences of various gods. So which are the gods that Mesopotamians believed in, fine. So we have the moon god of Ur, okay. So what do we have here? We have the moon god of Ur. Then we have Inanna, who was the goddess of love and war, ठीक है। Okay, so these are the gods which would be installed in the temples. Sorry, I made a mistake over here.
ठीक है, ये वो भगवान थे और ये वो भगवान की मूर्तियां थी which would be installed in the temples and they were considered as what? They were considered as houses, है ना. उनको क्या मानते थे? उनको residence मानते थे, उनको घर मानते थे. किसका? भगवान का. ठीक है, fine. So now ultimately with time, मतलब eventually these temples became larger over time. They would have several rooms and they also would have courtyards. ठीक है, so what happened is eventually धीरे 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 क्या हुआ? Eventually these temples became so they would have several rooms. ठीक है, and they would have a courtyard also, है ना. तो पहले देखो क्या था, छोटा सा कमरा होता था, छोटा सा एक टेम्पल होता था which would be made of unbaked bricks, but eventually temples had become bigger and bigger and they would have number of rooms, they would have courtyards also. ठीक है, fine, all right. Now the question is that how have the archaeologists identified these temple buildings? Fine. So there's a way in which archaeologists have identified these temple building and that is through the temple wall. Fine. So अगर आप temple wall को देखोगे, so archaeologists have found out that the temple walls are going in and out at regular intervals. So the outer walls of the temple, या कह लो जो उनकी boundaries होती है ना, they keep going in and out. Fine. So अब ये क्या है भाई, बाउंड्रीज गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स, इसका क्या मतलब है? सो बाउंड्रीज जो है ना गाइस, वो कुछ इस तरह से बनती थी. ठीक है, आप देखो कि ये इन जा रही है, फिर आउट, फिर इन, फिर आउट, और इसको ही आप एक 3D फिगर में इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको ये से ना यहाँ पे से ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ, बना करके. वेट, ओके. सो नाउ कैन यू सी, आप ऐसे देखो यहाँ पे. ठीक है, so now you can see here, right? So यहाँ पे आप देखो कि जो टेम्पल की बाउंड्री है ना, वो ऐसे इन एंड आउट हो रही है. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, so can you see here they're going in and out, all right? So इसको ही थोड़ा सा इमेजिन कर लो आप 3D फिगर में. फाइन. So it is going in over here, then out, then in and out. Fine. So ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, this I think is a better understanding. Fine. So it is going what? It is going in and out at regular intervals. ये दिख भी रहा है? हाँ. So in and out at regular intervals, and this is how they have been identified. ठीक है? Now the god obviously was the focus of worship and number of things have been offered. तो क्या क्या चीजें ऑफर की जाती थी? There was grain, there was curd, there was fish. Fine. So what was the offerings which were there? Grain, fish, कर्ड. तो हमें कैसे पता कि फिश ऑफर की जाती थी गाइस? ठीक है, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करना, जो टेम्पल का जो जमीन है, जो फ्लोर है ना, इट हैज अ थिक लेयर ऑफ फिश बोन्स. So that is why we have come to the conclusion that fishes were being offered. Fine.
that the gods were seen as theoretical owners of everything, fine? Your agricultural lands, your fisheries, your herds, your communities, everything, fine? So भगवान को हर चीज का ओनर माना जाता था, okay? Now eventually with passing of time, temples also became centers of economic activities, ठीक है? So what happened here is temples okay, temples क्या बन गई थी guys? Temples have eventually become centers of what? Centers of economic activities, ठीक है? तो हमें कैसे पता? So basically with time जो भी चीजें, जो भी economic activities हैं, like for example processing of food, like for example oil pressing, grain grinding, spinning, weaving, etc. they were all being done inside the temples. Please remember कि मैंने यहाँ पे बोला था कि temples have become big, they have several rooms now. So these rooms would be occupied for what? These rooms would be occupied for this purpose only. इन कमरों में काम क्या हो रहा है? इन कमरों में यही चीजें हो रही हैं guys. All kinds of economic activities, processing, weaving, oil pressing, spinning, weaving, grain grinding, ये सब कुछ जो है वो temples में ही हो रहे हैं, fine? Because all of these things were happening in the temple, the organizer, the person who is going to keep a record of the transaction, so all the people who were related to the production of things, they also started coming to the temples, तो वो भी आकर के temples में ही रहने लग गए, ठीक है? So, organizer of production, employer of merchants, keeper of records of distribution and allotment of grains, etc. They also started coming to the temples and living here. Why? Because all the economic activities were happening in the temples. ठीक है? So temples had eventually become what? They had eventually become centers of economic activities. How? How did this happen? So in the rooms which I have mentioned just now in the temples, what would happen is all the economic activities, processing, weaving, grinding, grain grinding, spinning, etc. All of these things would be happening where? All of these things would be happening in the temples, in the rooms, fine? So now people who were related to production, like for example, the organizer of production, fine? The person who is going to keep a record, the person who is going to distribute distribute these things, the person who is going to establish trade, fine? The person who is going to pay these people, they would all also start living in the temples itself. So the entire economic activity, पूरी economic activity जो है वो कहाँ focus हो गई है? पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फोकस हो गई है आपके कहाँ पे? It has focused now in the temple. So temples have also become centers of what? Temples have also become centers of economic activity. ठीक है? Okay. So guys, इसके आगे का जो पोर्शन है which is of उरुक, वो आई थिंक अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे बिकॉज अभी हम उसको अच्छे से फिनिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो अभी हमने क्या देखा है? जस्ट नाउ वी हैव सीन हाउ टेम्पल टाउन्स हैड बिगन, कैसे उनकी शुरुआत हुई थी बहुत ही छोटे से लेवल से, एक छोटे टेम्पल से जहां पे स्मॉल टेम्पल्स होती थी अनबेक्ड ब्रिक्स की, टू ह्यूज टेम्पल्स विद कोर्टयार्ड्स एंड रूम्स एंड टेम्पल्स बिकमिंग सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है? चलिए हमने काफी कुछ कवर कर लिया तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हो गया. सो सबसे पहले हमने देखा क्या? हमने एक टाइमलाइन देखी जिसमें हमने डिस्कस किया कि सिविलाइजेशन जो है वो होती क्या है एंड सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट व्हाई? बिकॉज देयर इज इंटरडिपेंडेंसी, फाइन? और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं सिविलाइजेशन के, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, पॉलिटी है, कल्चर है, रिलीजन है, ट्रेड है. सो ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स विल बी डिस्कसिंग हियर फॉर मेसोपोटामिया, ठीक है? सबसे पहले हमने उनकी ओरिजिन्स के बारे में देखा. व्हाट आर द सोर्सेज दैट वी हैव टू स्टडी देम. देन व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ देयर लैंग्वेज बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमने देखा उनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, फाइन? उसके बाद वी सॉ द इंडिकेटर्स ऑफ अर्बनिज्म एंड हाउ मेसोपोटामिया फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अर्बनिज्म, फाइन?
उसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, हाउ what are the uses of writing, fine. Then what is the system of writing, and lastly we had focused on urbanization which started in the 5000 BCE. ठीक है, तो यहां तक हमने फिनिश कर लिया है. इसके आगे का जो भी पोर्शन है, इसके आगे हमें बात करनी है उरुक के बारे में. वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट और, वी हैव टू टॉक अबाउट मारी, वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ लाइफ वाज इन द सिटीज, व्हाट काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग वाज हैपनिंग जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो दैट वी विल कवर टुमारो. तो वो हम कब कवर करेंगे, वो हम कल की लेक्चर में फिनिश करेंगे. ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर हमारा जल्दी खत्म हो गया तो हम रोमन एम्पायर के साथ जो है वो शुरू भी करेंगे. फाइन. सो गाइज, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अभी जो हम कर रहे हैं ना वो बेसिक एनसीईआरटी है. ठीक है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा है, सो यू वुड सी दैट दे हैव गिवन यू परसेंटेज, कि कुछ परसेंटेज जो है हम एनसीईआरटी से पूछेंगे, कुछ हम उसके ऊपर से पूछेंगे ग्रेजुएशन से, कुछ हम मास्टर्स लेवल से पूछेंगे. एंड सिंस वी आर डूइंग दिस फॉर पीजीटी, we obviously have to do at least till the graduation level. So abhi right now I'm just covering with your basic NCERTs, fine. और जिन chapters में मुझे लगेगा कि हाँ we have to cover extra, or that we should cover extra, I would definitely be covering it till the graduation level. I'll also try to cover it till the post graduation level, fine. This also depends on the kind of questions you have been asked. Okay, chaliye. All right guys, so I think I will end the session over here. We have done quite a few things, so please इसको revise कर लीजिएगा. ठीक है, तो इससे आपका NCERTs जो है एटलीस्ट वो बेसिक हमारा खत्म होता जाएगा. ठीक है, चलो. All right, thank you so much for joining me over here guys. It was an absolute pleasure to have you all, and if you need anything extra from my side, कोई भी हैंड आउट, कोई भी फ्लो चार्ट, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद इट. मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी. और ऑल्सो गाइज, दिस इज योर वेरी फर्स्ट लेक्चर विथ मी, राइट? तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि टीचिंग कुछ सही से नहीं हो पा रही, या आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, और इफ यू हैव एनी सजेशंस, कोई भी फीडबैक है आपके, कोई भी सजेशंस हैं रिगार्डिंग माय टीचिंग मेथड, आपको लगता है कि नहीं मैम हमें ऐसे नहीं ऐसे बेटर समझ में आएगा, या ऐसे नहीं ऐसे बेटर हो जाएगा, तो आप मुझे जरूर बताइएगा एंड आई विल डेफिनेटली अकोमोडेट इट. मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको पूरी तरीके से अकोमोडेट करूं, क्योंकि मेरा मेन एम यही है कि आपको चीजें समझ आए एंड यू आर एबल टू स्कोर वेल. ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. फाइन. So if you have any suggestions, any feedbacks, or if you anything that you're not liking in the teaching method, or anything you're liking in the teaching method also, you can let me know. ठीक है, ताकि मैं उसी हिसाब से फिर हमारे lectures जो हैं वो continue करूं. ठीक है, चलिए. All right, thank you so much guys for joining me over here. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see you in the next lecture. So then please take care. Thank you. Bye-bye.